यार क्या हम कभी वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर पाएंगे? मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है? ओके, सो आई टेल यू, आई एम अ फिल्म मेकर, आई हैव बीन वन फॉर द पास्ट 5 years एंड माई जॉब इज ऑलवेज रिक्वायर्ड मी टू ट्रैवल, एंड देन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड व्हेन आई एम स्पेशली ऑन शूट्स, इवन व्हेन आई एम नॉट ट्रैवलिंग, इवन व्हेन आई एम इन द city and on a shoot, there's so much going on the shoot that when I come home, all the strength that I have is gone. I'm completely drained and tired, and all I can do is just crash on bed, order in food and just sleep. जब लाइफ में वर्क चल रहा है तो 100% वर्क ही चल रहा है, और जब लाइफ चल रही है तो 100% लाइफ ही चल रही है. बट वॉट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस? I think for me, what I've understood is that when I'm able to do my life's daily based activities and also work simultaneously, that is work life balance for me. But then हाउ डू वी अचीव इट ऑन रेगुलर बेसिस? बिकॉज हाँ ठीक है, हम सब ने थोड़े स्टिंट्स ऑफ टाइम के लिए तो ये सब अचीव किया ही है कि हाँ ठीक है, फॉर अ वीक वी वर लाइक बैलेंसिंग आउट थिंग्स ग्रेटली एंड ऑल दैट. और मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि वी पुट इन ऑल आर टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी इन वर्किंग, एंड नाउ एवरीथिंग एल्स इन आर लाइव्स इज़ कम्प्लीटली आउटसोर्स्ड. हमारी गाड़ी कोई और चला रहा है, हमारा खाना कोई और बना रहा है, हमारा घर कोई और साफ़ कर रहा है. See, I can't talk for anyone else, I can only talk for myself, but I feel it really strips you of the fun and the joy of living life. For me, a good day is when I get up, I can work, I can do my workouts, I can cook my own food, I can clean my own house. I know maybe once I have a bigger house, I might not be able to clean all of it, which might also mean that I should also not have that bigger house, but that's for another day. तो हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ऑफ हो चुका है, बिकॉज we've just put in too many of our eggs in one basket, and then that one basket is controlling our whole lives, which is of course work in most of our cases, and that is where we're losing it. Now believe me, I don't really have a real workaround for this, or I don't have a way out, because even I am figuring out my own answer. इस वीडियो में ना मेरे पास तुम्हें कुछ सिखाने के लिए नहीं है, but I just want to make you aware so that you understand that okay, are you having that balance in your life or not? If you do not have that balance, that's fine. एक चीज़ और मुझे जो समझ आई है वो ये है कि हमें ना लाइफ में ना कोई भी स्केल जैसा परफेक्टली बैलेंस नहीं होंगे. इट्स इधर गोना बी टू हैवी ऑन दिस साइड और टू हैवी ऑन द अदर साइड, बट इट्स ऑलवेज गोना कीप चेंजिंग. वो कभी भी एकदम परफेक्ट बैलेंस पे नहीं आएगा. मतलब इट माइट कम, बट फॉर अ शॉर्ट वाइल इट विल ऑलवेज कीप टिपिंग ऑन द अदर साइड वन टाइम और द अदर. तो इसका जो रियल सोल्यूशन है वो यही है कि टू कीप क्रॉसिंग योर बाउंड्रीज, टू कीप क्रॉसिंग योर लिमिट्स, एंड देन अंडरस्टैंड वेयर योर लिमिट्स आर, आइडेंटिफाई देम, and then go back to the drawing board and figure out how can you work around it and have balance in your life. You might be working till 3 o'clock at night, but you figure out कि अच्छा after 11 I do not want to work, so you can note it down and try to change circumstances in your life and maybe put your foot down whenever you are supposed to work beyond 11. वैसे तो 11 बजे तक भी तुम काम कर रहे हो तो ठीक है, everyone works, has a different schedule, okay, no judgments please. So just be aware of where your time is going, how much do you want for yourself, what are the things that you want to do, and how much time do you want yourself to allocate to them. Of course even then things are gonna come your way, और वो जहाँ तुमने 8 बजे की लिमिट लगाई है वहाँ पे तुम्हारे 2 भी बजेंगे, बट अ वन ऑफ इज़ फाइन. कभी कभी करना पड़ रहा है, ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो फन समटाइम्स, इट्स ऑल्सो thrill, and it's also some excitement. Like if I talk about myself, so I'm really passionate about filmmaking, और इस process के चक्कर में I never realize how much of myself am I giving to the process, to the project, that when I come back home I realize, oh shit, I've completely drained myself, and I did not even realize that when I was shooting there, because I was so excited by the project, so much into it. But we have to realize, and we have to understand, and we have to keep reminding ourselves that okay, we also have a life beyond this. बिलीव मी, मैंने ये बैलेंस अचीव नहीं किया है. ऑल आई वॉन्ट यू इज़ टू बी अवेयर वेयर योर लाइफ इज़ राइट नाउ, एंड अंडरस्टैंड वॉट वुड बी दैट आइडियल बैलेंस फॉर यू, एंड देन ट्राई टू अचीव इट, ट्राई टू स्ट्राइव फॉर इट. बाकी तो जो जहाँ जाना है, जो स्पॉन्टेनिटी है लाइफ की, वो तो रहेगी. बट इफ़ इट इज़ हैपनिंग समटाइम्स देन इट इज़ फन, बट इफ़ इट्स हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस देन इट्स नॉट फन. अब मैं प्लेन की वेट करनी पड़ेगी. तो आज मेरा प्रवचन थोड़ा हाफ एस्ड ही है, बट ऑल आई रियली मीन टू से इज़ दैट you have to identify your boundaries, and also to identify your boundaries it is important for us to cross them, because until we really cross them we don't understand where they are. So I think it's a good thing to even go through that suffering right now, but do remember to come back home, work on that drawing board, and then get back to it on the battlefield again with a clearer mindset, knowing your boundaries and what you want out of it. Alright, that's it for me. My shoot is over, so I'm back to being a little more normal, catching up on my sleep and some rest, and of course making this video in the daytime today. But post करते करते रात हो जाएगी क्योंकि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ. But anyway, see you guys. Thanks for tuning in again. Bye.